there's a repetition in the topic, but there are certain aspects that I'll be covering today and focusing on certain doubts that were there in the last session. So, I'm Dr. Aakriti Chawla. I'm a dermatologist. So, what is the focus on skincare? The main issues that we face after 40 or even after 60 are dryness, thinning of skin, loss of elasticity, fine lines, and wrinkles. Now, why is all this occurring? It is because of decreased collagen production because of decreased estrogen levels. So the skin becomes more fragile. There is skin thickness. There is reduction in the skin thickness, which also leads to easy bruisability. There is loss of natural moisture because of decreased sebum activity because of decreased estrogen. So that will lead to dryness. Also, there is increased sensitivity of the skin because of changes in the skin structure. The collagen breakdown occurs, the skin becomes thin, the role of estrogen in stimulating the fibroblasts that is decreased. So there is decrease in the hyaluronic acid, which will decrease the hydration. So the skin will be more dry, there will be more wrinkling, there will be more visible skin lines. Now, all of this will occur and this will impact the lipid barrier. The skin acts as a barrier because of the lipids in the skin. So now when that is deficient, it will lead to transepidermal water loss. Now, the basic skincare routine should focus on hydration, nourishment, and whatever concerns you have, fine lines, age spots, loss of elasticity. Now, basic, this is absolutely basic. I'll be dividing it into two, morning routine and evening routine. And I will explain why it is different. So in morning routine, if you don't have any skin concern, you are absolutely, like you are very satisfied with how your skin is. कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर तो बेसिक चीज जो करनी चाहिए स्किन को मेंटेन करने के लिए दैट इज यू क्लेंस द स्किन यू मॉइस्चराइज एंड देन यू प्रोटेक्ट द स्किन विद सन अगर कोई इशू है मिलाजमा है डार्क स्पॉट्स है अनइवन स्किन टोन है व्हाटएवर योर कंसर्न मे बी तो फर्स्ट यू विल क्लेंस द स्किन सबसे पहले जो भी ट्रीटमेंट देनी है कोई भी जेल क्रीम या सीरम व्हाटएवर दैट यू हैव बीन गिवन प्रेफरेबली बाय अ डर्मेटोलॉजिस्ट फॉर योर कंसर्न आप पहले वो लगाएंगे उसके बाद मॉइस्चराइज एंड देन सनस्क्रीन अ लॉट ऑफ पीपल विल से इतना टाइम नहीं होता है ये 3 4 5 6 स्टेप्स कैसे करेंगे तो बेसिकली आप नहा के आ गए तो पहला स्टेप तो तभी हो गया बेसिक स्टेप दो ही रहते हैं मॉइस्चराइज कर लीजिए निकलते ही वंस यू आर रेडी यू अप्लाई सनस्क्रीन सो यू विल नॉट हैव टू गिव बहुत ज्यादा गैप इट विल नॉट बी टाइम कंज्यूमिंग एंड स्किन केयर इकट्ठा नहीं होके डस्ट नहीं खाएगा दिस इज समथिंग दैट इज सिंपल कैन बी डन ऑन अ डेली बेसिस अगर कोई कंसर्न है तो उसमें एक स्टेप ऐड हो जाएगा जेल या फिर सीरम डिपेंडिंग ऑन क्या कंसर्न है सो क्लेंस करने के लिए कोई भी माइल्ड क्लेंजर यूज कर सकते हैं दैट शुड हैव ग्लिसरीन एंड सेरामाइड्स सीरम या ट्रीट करने के लिए कोई स्पेसिफिक कंसर्न इट विल डिपेंड ऑन आपकी कंसर्न क्या है बट विटामिन सी सीरम जो होता है दैट इज द इजीएस्ट टू यूज एज इफ यू आर स्टार्टिंग स्किन केयर इफ यू वांट टू ब्राइटन योर स्किन इवन देन विटामिन सी इज अ वेरी गुड ऑप्शन लास्ट सेशन also I emphasized a lot on moisturization. Hyaluronic acid, ceramides and peptides are the ingredients you want to look for, but I will be giving some recommendations. The last step will be sunscreen. That is one of the most important and crucial steps because even though by the time you are post 60, जो sun damage होता है, that is very, very evident. So you will obviously need some form of treatment for those spots. बट और ना बने और ज्यादा स्किन एजिड जल्दी जल्दी ना दिखने लगे उसके लिए सनस्क्रीन इज वेरी इंपॉर्टेंट अब आते हैं इवनिंग रूटीन पे सो इवनिंग रूटीन में सनस्क्रीन तो हट ही गया एक ही स्टेप रह जाता है कि आप फेस वॉश करें एंड मॉइस्चराइज करें दिस इज बेसिक कोई अगर कंसर्न है या फिर आप एंटी एजिंग कुछ यूज करना चाहते हैं तो फेस वॉश करने के बाद यू विल यूज दैट पर्टिकुलर जेल सीरम व्हाटएवर that has been recommended and then you moisturize again these are 5-minute routines that ideally should be possible but I know everybody is really busy so you can make it as simple कि अगर नहीं है टाइम तो बस चेहरा धो के मॉइस्चराइज करिएगा
Like I explained, the cleanser can be anything that suits your face, or I'll be recommending some gentle cleansers. ट्रीटमेंट के लिए नाइट टाइम में डिफरेंट इसलिए है कि जो रेटिनॉल होते हैं, जो एंटी एजिंग पेप्टाइड्स होते हैं, दे आर लाइट सेंसिटिव. तो यूजुअली it is something that is has to be applied at night. Vitamin C serum is also sun sensitive, but अगर आप दोनों चीजें लगा रहे हैं तो विटामिन सी मॉर्निंग में लगा सकते हैं और रेटिनॉल रात को. A lot of people are wary of retinol, तो उसमें आजकल एक फाइटो द प्लांट डिराइव्ड रेटिनॉल आता है बकुचियॉन करके. दैट कैन बी यूज्ड बिकॉज दैट इज क्वाइट जेंटल ऑन द स्किन. तो जो साइड इफेक्ट्स रेटिनॉल के साथ कभी कभार कुछ लोग को आते हैं, रेडनेस का, सेंसिटाइजेशन का, ड्राइनेस का, वो नहीं आता. एंड अगेन लाइक आई सेड, विद रेटिनॉल यू हैव टू स्टार्ट वेरी स्लो. पहले हफ्ते में 2 या 3 बार यूज करें, हफ्ते में 2 बार यूज करें, उसके बाद धीरे धीरे उसको हफ्ते में 3 या 4 बार, फिर उसके बाद उसको डेली रात में यूज करें. बिकॉज इट इज वेरी इफेक्टिव एंड एट द सेम टाइम इट इज वेरी पोटेंट. तो उसको बहुत स्लोली यूज करना है ताकि उसके साइड इफेक्ट्स ना आए. मॉइस्चराइजेशन रात को इज वेरी एसेंशियल. अगर दिन में कोई लाइट वेट मॉइस्चराइजर यूज करते हैं तो नाइट में थोड़ा डीपली हाइड्रेटिंग यूज कर सकते हैं. सो बिकॉज इट विल हेल्प कि ओवरनाइट जब रिपेयर हो रही है बॉडी की तो हाइड्रेशन भी अच्छे से रहे, एंड you don't feel that stickiness as much because you're not out and about, sweating नहीं है. तो those factors they have an effect. The other thing that can be used at night, why I mention eye cream in the night, is because the effective eye creams, उनमें usually retinol, that is the anti-aging part, retinol या फिर peptides या फिर light sensitive peptides होते हैं. तो वो रात को यूज करना is much more beneficial. Now something that can be added is exfoliation. बहुत commonly Indian households में scrub use करते हैं. Now the problem with scrubs is that sometimes उनके जो granules होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं. So when you're scrubbing the face, they can actually scrub too much, or they can cause sensitization, they can cause redness and irritation. So instead of that, you can use something known as AHA or BHA, alpha hydroxy acids and beta hydroxy acids. ये टोनर लिक्विड फॉर्म में आते हैं. यू कैन यूज इट इन कॉटन और यू कैन यूज इट डायरेक्टली विद हैंड, एंड दे जस्ट नीड टू बी अप्लाइड. बट यू डोंट नीड टू डू दिस ऑन अ डेली बेसिस अनलेस यू हैव सम सॉर्ट ऑफ कंसर्न लाइक एक्ने और पिगमेंटेशन. नॉर्मल स्किन रूटीन में इनको हफ्ते में 1 या 2 बार आप यूज करें तो फेस पे ग्लो बना रहता है. मास्किंग जो होती है, फ्रैंकली वो कोई भी आप यूज कर सकते हैं. इट इज मोर लाइक अ स्पा, मोर ऑफ सेल्फ केयर एंड अ फील गुड फैक्टर. So unless it has something जिससे आप allergic हैं, any mask can be used. Additional tips is obviously stay hydrated. The more hydrated you are, the better your skin will look, because जो अंदर चल रहा है वो skin पे आएगा. Nutrient rich foods, antioxidants, omega-3 fatty acids, collagen boosting nutrients. कोलाजन की बात करते हैं तो बिकॉज पोस्ट 60 स्पेशली अगर प्रोटीन इनटेक एडिक्वेट नहीं है तो स्किन की थिनिंग ज्यादा होती है, ब्रूजेबिलिटी ज्यादा होती है, रिंकलिंग ज्यादा होती है. तो अगर आप उसके उस टाइम पे इफ यू टेक कोलाजन, दैट इज जस्ट 1 स्कूप पानी में, इट इज नॉट हैवी, इट इज लाइक व्हेन यू कंज्यूम इट, इट इज नॉट एज हैवी एज वे प्रोटीन या फिर जो बाकी प्रोटीन सप्लीमेंट्स होते हैं. दिस इज क्वाइट लाइट. शुगर फ्री ऑप्शंस भी आते हैं, सो इन केस इफ समबडी हैज डायबिटीज तो शुगर फ्री ऑप्शन भी है. बट यस, कोलाजन सप्लीमेंट्स मरीन होते हैं, मरीन डिराइव्ड होते हैं, तो वेजिटेरियन का इशू थोड़ा सा आता है. बट कोलाजन सप्लीमेंटेशन विल हेल्प विद द प्रोटीन पार्ट, दे विल हेल्प विद द स्किन, हेयर एंड नेल्स पार्ट. लाइक अभी मैंने बताया, ओवर एक्सफोलिएशन नहीं करना है, बहुत ज्यादा स्क्रबिंग नहीं करनी है. जो टोनर वाले एक्सफोलिएंट्स होते हैं, आई विल बी गिविंग एग्जांपल्स, वो बेटर रहते हैं बिकॉज स्किन थिन है तो इरिटेट जल्दी हो जाती है. एंड एज मैम हैड आल्सो एक्सप्लेन दैट व्हेनेवर यू आर यूजिंग समथिंग यू हैव टू बी जेंटल ऑन द स्किन, यू हैव टू गो इन अपवर्ड मोशन. अगर आप ऐसे ऐसे क्रीम लगाएंगे तो वो रिंकल्स और बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा. तो सेंटर से बाहर को, दैट इज द इजीएस्ट वे, कि आपने अगर ऐसे भी लिया क्रीम, सेंटर से बाहर को लगाया,
अंडर आई और आई एरिया में जब भी लगाते हैं तब रिंग फिंगर का यूज करें, बिकॉज इससे फोर्स कम पड़ता है. So you can use a ring finger when you're applying around the eyes. Now coming to the main part, products क्या use करें, what to use on the skin. So these are my personal recommendations. These are not sponsored, or I don't have any agenda here. This is just something कि product I find it is effective and it is good. That is why I have listed it here. So for cleansers, Cetaphil gentle skin cleanser, CeraVe का hydrating skin cleanser if you have dry skin. If you have acne prone skin जो कभी कभार पोस्ट मेनोपॉज में आ जाता है, या फिर ऑयली स्किन की हिस्ट्री है, सेबोरिया की प्रॉब्लम है, तो उसमें रेजुग्लो फेस वॉश दैट हैज ग्लाइकोलिक एंड सैलिसिलिक एसिड, these can be used. Now coming to the serum part. So vitamin C serum, a lot of serums are available in the market. These are just some that are standard. They are good preparations and that can be used. SHARMA का vitamin C serum, Cosrx का vitamin C serum, and there is something known as propolis. Propolis is basically honeybee derived, so that can also help face को glow देने में, थोड़ा skin lightening करने में. So in that aspect, these are quite effective. Now coming to the main part, that is moisturization. आप कुछ और करो ना करो, moisturization जरूर करनी है. So if you have dry skin or if you have normal to dry skin, तो Embryolisse आता है, CeraVe का facial moisturizing lotion आता है, सेबहाइड्रा का मॉइस्चराइजिंग लोशन आता है. सेबहाइड्रा का मॉइस्चराइजिंग लोशन आप बॉडी पे भी यूज कर सकते हैं. अगर ऑयली स्किन है या फिर सेबोरिक डर्मेटाइटिस, सेबोरिया का कंप्लेंट्स है, अभी भी परसिस्ट कर रहे हैं, तो आप क्लिनिक का मॉइस्चर सर्च वाला मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो, बिकॉज ये जेल बेस्ड होता है, तो ये फेस पे लाइट वेट रहता है और सीबम का जो लेवल है, जो नेचुरल मैकेनिज्म है, वो डिस्टर्ब नहीं करेगा. Sunscreens, these are my personal recommendations. Episoft AC, this is a very hydrating sunscreen. This can be easily used. अगर कोरियन स्किन केयर में इंटरेस्ट है तो ब्यूटी ऑफ जॉसन का सन रिलीफ प्रोबायोटिक सनस्क्रीन आता है. दिस ऑल्सो हाइड्रेट्स द स्किन रियली वेल. अगर ये आपको प्रिपरेशंस बहुत थिक लगते हैं या फिर सनस्क्रीन लगा के यू फील दैट बहुत ज्यादा ऐसे स्टिकी हो गई है स्किन, देन यू कैन गो फॉर अ जेल बेस्ड सनस्क्रीन लाइक एक्ने यूवी जेल. Now, as I had explained before, serums suitable for night. So basically, serums that have retinol in them. So Olay ka Retinologist retinol 24, the ordinary ka retinol 0.05 in scoline. So this serum will also take care of the moisturization part, which you have to do if you are using any form of retinol. Then 0.3% retinol cream, Rivella Cipla की आती है, and then there is again a Korean product called Beauty of Joseon Kai Revived Eye Cream. This is an eye cream, but this has retinol in it. Now, what is the difference between retinol and retinol? These are basically the different forms, aldehyde forms. रेटिनॉल जो होता है वो थोड़ा जेंटल होता है स्किन पे, तो अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है या फिर आपकी थोड़ा एक्ने प्रोन स्किन है या फिर यू आर नॉट श्योर वेदर यू शुड यूज अ रेटिनॉल और नॉट, तो आप इससे शुरू कर सकते हो. इवन दो इट्स एन आई क्रीम, यू कैन अप्लाई इट ऑन योर फेस. ये बहुत लाइट वेट और जेंटल रहती है. सो इफ यू आर स्टार्टिंग आउट देन दिस इज अ गुड ऑप्शन. तो फिर अब एक्सफोलिएंट्स जो AHA, BHA, बहुत सारे मैंने नाम लिए थे, दीज आर बेसिकली एसिड्स जो नेचुरली डिराइव्ड होते हैं. अल्फा हाइड्रोक्सी AHA, बीटा हाइड्रोक्सी BHA. तो उसमें कॉस्टरेक्स का एक टोनर आता है. यू कैन यूज दिस 2 से 3 बार हफ्ते में. सो इट विल टेक केयर ऑफ द एक्सफोलिएशन पार्ट, डेड स्किन रिमूवल पार्ट, इंस्टेड ऑफ यूजिंग स्क्रब्स, स्पेशली इफ यू नो स्क्रब्स गिव यू इरिटेशन या फिर रेडनेस या फिर इचिंग, तो उसमें दीज हेल्प. बट यस, इसको डेली नहीं यूज करना है, हफ्ते में 2 या 3 बार यूजुअली इनफ होता है. या फिर द ऑर्डिनरी का ग्लाइकोलिक एसिड सीरम आता है, वो यूज कर सकते हैं. Now coming next to which dermatological procedure you should get done. Skincare routine if you're already doing, या फिर ये basic skincare आप already कर रहे थे but आपकी फिर भी कोई skin concern है, तो what procedure you can get done by consulting a dermatologist.
So first, if you chemical peels, so now if you have pigmentation, uneven skin tone है या फिर melasma आ रहा है या फिर कुछ लोग को not post 60 but post menopausal कभी कभी acne आ जाता है या फिर in general you just want a glow up, you just want your skin to glow and feel a little fresh. तो उसमें आप केमिकल पील करा सकते हैं. डिफरेंट डिफरेंट केमिकल पील्स आर देयर, ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, कॉम्बिनेशन पील्स. That will depend when you go show to a dermatologist what they think will suit your skin and give you the desired result that you want. फिर अब आते हैं लेजर ट्रीटमेंट्स पे. सो इफ यू हैव अगेन अनइवन स्किन टोन, पिगमेंट पैचेस हैं, फोटो एजिंग है, छोटे छोटे ब्लैक स्पॉट्स आ रहे हैं या फिर यहाँ पे पिगमेंटेशन आ रहा है या फिर सेबोरिक केराटोसिस आ रहे हैं, मिलास्मा आ रहा है या फिर बहुत लोग को फाइन फेशियल हेयर होता है जो मेनोपॉज के बाद बढ़ जाता है. इन दैट केस यू कैन यूज क्यू स्विच NDAC लेजर. ये पिगमेंट्री लेजर होता है. इट वर्क्स ऑन द फेस, अनइवन स्किन टोन को इवन करेगा. बहुत बार मिलास्मा में भी यूज किया जाता है ये, जहाँ पे रिड्यूसेस द पिगमेंट पैचेस. नाउ इफ यू हैव फाइन लाइंस, स्कार्स, फेशियल रिंकलिंग, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं. लेजर ट्रीटमेंट्स रहते हैं, बोटॉक्स फिलर्स रहता है और फेशियल टाइटनिंग रहता है. आपको कौन सी चीज चाहिए अपने लिए? इफ यू टॉक इट आउट टू द डर्मेटोलॉजिस्ट, दे विल बी एबल टू गाइड यू पर्सनली एज टू आपकी जो स्पेसिफिक कंसर्न है उसके लिए क्या ट्रीटमेंट बेस्ट रहेगी. बट आई विल बी गिविंग एन ओवरव्यू ऑफ ऑल द ट्रीटमेंट्स दैट आर अवेलेबल. सो एक होता है फ्रैक्शनल CO2. अगर स्किन का टेक्सचर पसंद नहीं है, बहुत पतली पतली लाइनें हैं और थोड़ा फेशियल का रेजुविनेशन चाहिए, थोड़ा सा स्टिमुलेट करना है स्किन को टू लुक अ लिटिल यूथफुल एंड प्लम्प, तो उसके लिए फ्रैक्शनल CO2 लेजर करा सकते हैं. या फिर माइक्रो नीडलिंग विद PRP, दैट इज प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी. प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी अकेले भी करा सकते हैं. हाउ दिस वर्क्स, बेसिकली आपका ब्लड लिया जाएगा, उसका प्लेटलेट्स को सेपरेट सेंट्रीफ्यूज करके प्लेटलेट्स को सेपरेट करके उसे स्किन में इंजेक्ट करते हैं. अब ये क्यों कर रहे हैं? बिकॉज प्लेटलेट्स हैव ग्रोथ फैक्टर्स. So this stimulates by the stretching action of the bolus जो हम PRP देते हैं and the growth factors in the PRP, it will stimulate collagen production. It will stimulate the macrophages and fibroblasts to produce more collagen. तो स्किन थोड़ी प्लम्प दिखती है, थोड़ा फाइन लाइंस, स्कार्स के अपीयरेंस कम हो जाती है. बट ये वन टाइम नहीं होता है, इसको 1 मंथ के गैप पे 3-4 बारी कराना पड़ता है. उसके बाद आता है माइक्रो नीडलिंग. अगेन अगर ओल्ड स्कारिंग बहुत है, लाइन्स रिंकल्स बहुत आ गए हैं, स्किन का टेक्सचर अच्छा नहीं है, तो उसमें आप MNRF करा सकते हो. बड़ी फाइन नीडल्स होते हैं जो जाके स्टिमुलेट अगेन करते हैं कोलैजन प्रोडक्शन. नेक्स्ट आते हैं बोटॉक्स पे. सो बोटॉक्स के लिए अगर इधर फाइन लाइंस हैं, ग्लैबुलर लाइंस हैं या फिर फ्रंटल लाइंस हैं इधर, या फिर बनी लाइंस हो गए, आपके टॉप लिप के लाइंस हैं, चिन पे डिम्पलिंग है, यहाँ पे ड्रूपिंग है. डिपेंड्स ऑन व्हाट यू गोइंग फॉर. क्रोज फीट जो बहुत कॉमनली होता है. डिपेंड्स व्हाट इज इट दैट कंसर्न यू हैव ऑन योर फेस. हर किसी का फेस अलग है, किसको कौन सी लाइन परेशान कर रही है वो भी डिफरेंट होगा. तो आपके हिसाब से these are the lines that we usually people get treatment for. तो अब आपको जो भी दिक्कत है, बहुत ज्यादा लोगों को पोस्ट 60 यहाँ पे स्किन की सैगिंग और नेक लाइंस होते हैं. सो इन ऑल दीज बोटॉक्स इज वन ऑफ द ऑप्शंस. आई विल बी डिस्कसिंग द अदर ऑप्शंस एज वेल. बोटॉक्स इज वन ऑफ द ऑप्शंस. सो दीज आर few examples. So here if you see, these are the frontal lines, and here post botox you see there is smoothing of the skin. Here there is drooping of the angle of the mouth, and इस एंगल पे विजिबल नहीं, बट यहाँ पे जाउल फॉर्मेशन होने लगता है. तो here if you see there is upliftment of that. वो DOA मसल में we give botox. Now these are the glabellar lines. This is post botox. The frontal lines. This is post botox. And disclaimer: botox doesn't give you mask face. You will still have some movement of your muscles. If you don't want कि पूरी तरीके से चले जाए और सिर्फ थोड़ा बहुत रहे, कि थोड़ा बहुत मूवमेंट रहे और पूरी तरीके से नहीं जाए लेकिन थोड़ी स्मूथनिंग हो जाए, so you can discuss this with your dermatologist. They will give you the botox accordingly to what your needs are. Then coming next to fillers. Now with age जो हमारे फेस के फैट पैड्स होते हैं that actually make our skin look plump and पूरा fixed, so they
sort of because of gravity and aging they slip down या फिर they get displaced, तो हमारी स्किन की सैगिंग होती है, हमारा नेजोलेबियल फोल्ड प्रोमिनेंट हो जाता है, हमारा ये इधर लिप के कॉर्नर्स की ड्रूपिंग होने लगती है, ये जाउल फॉर्मेशन होने लगता है, यहाँ पे अंडर आई एरिया में देयर इज दिस फरोइंग एंड देयर इज लॉस ऑफ दैट फैट पैड हियर, there can be drooping of the upper eyebrow skin. So now with all these factors there is something known as fillers. Basically the most common ones used these days are hyaluronic acid injections. So what they do is they basically plump up your skin. They're not going to make you look like a cushion face या फिर जो बहुत सारी एक्ट्रेसेस में दिखता है कि फेस का एकदम स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया है, वो एकदम से नहीं होता है। आप प्रॉपर चीज के लिए, स्पेसिफिक चीज के लिए जब आप ले रहे हैं फिलर, जरूरी नहीं है आपको वैसा हो। ट्रेन्ड डर्मेटोलॉजिस्ट ने किया है तो यू विल एक्चुअली सी द इंप्रूवमेंट लाइक यू सीन द पिक्चर, कि आपका जो स्किन की ग्रूविंग है वो कम हो गई है, मिलार प्रोमिनेंस जो थोड़ा डिस्टॉर्टेड था वो अपलिफ्ट हो गया है, यहाँ पे जो जाउल्स और आपका नेजोलेबियल फोल्ड और जो आपका लिप का काउंटर जो ड्रूप कर रहा था, इट इज मोर अपलिफ्टेड। चिन का भी जो डिम्पलिंग बहुत ज्यादा होने लगता है या फिर बहुत राउंडेड चिन हो जाती है, उसको पॉइंटेड करने में बेसिकली ऑल दिस इज डन टू रिस्टोर द ओजी कर्व ऑफ द फेस व्हिच मेक्स इट लुक मोर यूथफुल। नेक्स्ट इज स्किन टाइटनिंग। अगर आपको बोटॉक्स फिलर्स नहीं कराना है तो देयर आर नॉन इन्वेजिव ऑप्शंस जिसमें स्किन की टाइटनिंग करके इट विल गिव यू अ लिफ्ट। आपकी जो फाइन लाइंस रिंकल्स हैं उनकी अपीयरेंस कम हो जाएगी बिकॉज स्किन टाइटनिंग हो जाएगी। जो बोटॉक्स फिलर्स होते हैं वो आपको 4 to 6 मंथ्स में रिपीट कराने रहते हैं। जो ये नॉन इन्वेजिव टेक्निक्स होती हैं ये साल में एक ही बार होती हैं। इनके रिजल्ट्स आपको स्लोअर दिखते हैं बिकॉज बॉडी धीरे धीरे ग्रेजुअली उन चेंजेस को अपने साथ लाती है और फिर दिखाती है। तो उसमें दो बेसिक रहते हैं स्किन टाइटनिंग के लिए नॉन इन्वेजिव जो रहते हैं। एक रहता है थर्माज, व्हेन यू हैव थोड़ा सा थिन स्किन, जब सैगिंग बहुत ज्यादा है तब थर्माज कराते हैं। अगर आपका बल्की फेस है, फैट ज्यादा है, तो फिर हाइफो कराया जाता है। सो दिस विल ऑल अगेन डिपेंड कि जब आप डर्मेटोलॉजिस्ट को जाकर दिखाएंगे कि आपकी कंसर्न रखेंगे तो दे गाइड यू कि कौन सी प्रोसीजर, कौन सा चीज आपके लिए बेटर सूट करेगा। बहुत बार मिक्स करके भी किया जाता है, जरूरी नहीं है कि एक ही चीज करी जाए। So this is basically showing, first photo is basically showing the lift that you see with thermage। कि जो फाइन लाइन रिंकल्स हैं वो स्मूदन आउट हो जाते हैं, जो सैगिंग ऑफ द स्किन है वो स्मूदन आउट हो जाती है। सेकंड पिक्चर में भी यू कैन सी दैट जो स्किन की सैगिंग है जॉ लाइन के अराउंड और जो नेजोलेबियल फोल्ड्स हैं, जो चीक एरिया है, अंडर आई एरिया है, ऑल ऑफ दैट गेट्स लिफ्टेड। बट दिस हैपेंस स्लोली। आप जब भी थर्माज या हाइफू कराते हैं उसके 3 से 4 महीने वेट करना पड़ता है आपको बिफोर यू सी द रिजल्ट्स। So that was about the dermatological procedures. Like I explained before, the nutraceuticals, omega-3s, collagen peptides and antioxidants. High protein intake will obviously help with the skin repair, but a lot of times post 60 taking high protein is not feasible. So usme collagen does. Then exercise, of course. Exercise will help with the skin, it will help with your health in general. Now there is something known as estrogen deficient skin. So this is something that is seen most commonly in postmenopausal females. It can be seen before 60 and it can be seen after 60 as well. So dryness and skin thinning. Dryness, like I explained, moisturizers will be your answer. Fine lines, wrinkles, Botox, fillers, non-invasive, thermage, RF, HIFU. Now for melasma, demelanizing agents, sunscreen, hormone workup if there is no improvement, and the dermatological procedures like peels, laser, all these things they can be done. There are other procedures that can also be done if the melasma is not responding to your topical cream. I have not listed the demelanizing agents because there are a lot of creams that do have side effects if not used properly. So it's always best that you consult a dermatologist and then you take treatment. For acne, if someone is suffering from acne, a lot of times senile comedones are seen, Favre-Roucouche syndrome is seen. So in that, you will probably be given anti-acne medicine to apply and the comedones will have to be removed. But if some other problem is there, obviously a hormone workup should be done. Chemical peels is another option that you can go for.
A lot of females postmenopausally, if they had hirsutism before, or even if they did not have, they tend to get unwanted facial hair. So in that, eflornithine cream, but this only works till the time you use it. The other option is laser hair reduction, LHR. Now, we also have topical estrogen creams, estradiol gel, that has been used for flushing. There are a lot of studies where the systemic absorption is not a lot and the side effects are also not a lot, but then there are studies that have conflicting results. So this is not used very commonly. There are other measures that are taken, but this is available in the market. There is also delayed healing in bruising. Simple zinc and vitamin C supplements, they help. Now, why does delayed healing in bruising occur? Because the skin becomes thinner, the blood vessels, they become more fragile. So this is something that is commonly faced in females post 60, also known as Bateman's purpura, basically purpura that occurs in the old age. So obviously you have to be careful, like ma'am explained, that you have to, be not afraid to ask for help and use hand railings and stuff like that. But if this is occurring, obviously a workup will be warranted. But zinc and vitamin C, they help with the easy bruising. So if somebody still has skin sensitivity or their skin sensitivity has increased with age, if you're planning to use any new product, please do a patch test. That is basically in this area of the skin below the ear and in the neck. You apply the new product for for 2 to 3 days and then use it. You use the product for 2 to 3 days and then you see if it is giving some reaction or not. You should avoid any harsh exfoliants like the scrubs that I mentioned, that they might suit you, they might cause problem as well. And alcohol based products also you should avoid because they can lead to sensitization. You can use fragrance free and hypoallergenic skincare. This is another example of a moisturizer that is suitable for hypoallergenic skin. Physiogel hypoallergenic calm and relief lotion. To conclude, you'll have to embrace your radiance. Aging is a natural, beautiful process. Consistent, tailored skincare, once you consult a dermatologist, will help you look and feel your best. There are a lot of skincare experts online who will tell you to use this or use that. I would suggest you consult a dermatologist who can examine your skin, see what exactly you're facing, can take into account whatever other medical conditions you might have, and then give you the expert advice. That is always the best option. And that's about it. I'm practicing at Reneha Skin Clinic in Noida, Sector 31. And for more details, you can contact me. You're most welcome at any time. Thank you. Thank you, Dr. Aakriti. So over to experts. Aakriti, this was awesome. Aakriti, this was awesome. Thank you, ma'am. बहुत सुंदर. Anybody want to ask any questions? Divya, comments by you first. Dr. Aakriti, you were excellent, and I think we all are going to look even more beautiful after your tips. I wanted to ask you, जैसे home remedies, like when we use almond oils की मसाज करते हैं हम almond oil की, कभी नारियल के तेल की, और दही और हल्दी से अपना फेस वॉश कर लेते हैं, कच्चा दूध, नींबू, all these things जो होम में रेमेडीज हैं, एलोवेरा खाने के लिए भी, लगाने के लिए भी, what do you think of them? I think they are pretty effective. So, it is something that you have used lifelong since we're catering to plastic steel. It's something that you've used before and it works for you, you can continue it, no issues. But if somebody is young, then I would ask them to be, take it with a pinch of salt. They might be allergic to something, they might see side effects as well. But if it is something that has suited you and you've used it for years together, you can easily continue using it. Thank you so much, Dr. Aakriti. You were great. Excellent. Thank you. Thank you. Dr. Chaturvedi, you want to ask something? And Dr. Chandan. Dr. Chandan. I just want to ask about my burnt fingers. Sorry. Now they are healing. Okay. Not today. Diwali के time था, so if you can give some advice because I